सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर बुक रीडिंग सेशन। सो आज हम जो बुक रीडिंग कर रहे हैं ये जनरली डीएम वासुदेवन का है। ठीक है, टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री फॉर मेडिकल स्टूडेंट। ठीक है, सो आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। नाउ सब सेलुलर ऑर्गेनेल एंड सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सो चैप्टर एट ए ग्लांस देख लेते हैं। द रीडर विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स: न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, आयन चैनल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके बाद यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। ठीक है, नाउ पहले सब सेलुलर ऑर्गेनेल क्या होता है देखते हैं। सो सेल कंटेन वेरियस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेल। फिगर 2.1 में ये दिया गया है, जो कि ये एक टिपिकल सेल होता है। नाउ when the cell membrane is disrupted either by mechanical means or by lysing the membrane by 2 in 20 a lipid solvent, the organized particles inside the cell are homogenized. This is usually carried out in 0.25 m sucrose at pH 7.4. The organelles could then be separated by applying डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। टेबल 2.1 में इसका मेंशन है। अल्बर्ट क्लाउडी गॉट नोबेल प्राइज इन 1974 फॉर द फ्रैक्शनेटिंग सबसेलुलर ऑर्गेनेल्स। मार्कर एंजाइम: some enzyme are present in certain organelles only. Such specific enzyme are called as marker enzyme। टेबल 2.1 में after centrifugation the separated organelles are identified by detection of a marker enzyme in the sample. Nucleus: it is the most prominent organelle of the cell. All cells of the body contain nucleus except mature RBC in circulation. The uppermost layer of skin also may not possess a readily identifiable nucleus. In some cell, nucleus occupies most of the available space. Example: small lymphocyte and spermatozoa. Nucleus is surrounded by two membranes. The inner one is called as a perinuclear membrane with numerous pores. Figure 2.2. The outer membrane is continuous with the membrane of endoplasmic reticulum. Nucleus contains the DNA. The chemical basis of a gene which governs all the function of the cell. The very long DNA molecules are complexed with protein to form chromatin and are further organized into chromosomes. डीएनए रेप्लिकेशन एंड आरएनए सिंथेसिस मतलब ट्रांसक्रिप्शन आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस. In some cell, a portion of the nucleus may be seen as lighter shaded area. This is called as nucleolus. Figure 2.2. This is the area for RNA processing and ribosome synthesis. The nucleolus is very prominent in cell actively synthesizing protein. Gabriel Valentine in 1836 described the nucleolus. Endoplasmic reticulum: it is a network of interconnecting membranes enclosing channels or cisternae that are continuous from outer nuclear envelope to outer plasma membrane. Under electron microscope, the reticular arrangement will have railway track appearance. Figure 2.1.
George Pallade was awarded a Nobel Prize in 1974 who identified the endoplasmic reticulum. Now table 2.1 separation of a subcellular organelle. तो यहाँ पर सबसेलुलर ऑर्गेनेल है, यहाँ पर पेलेट फॉर्म एट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ एंड ये होता है मार्कर एंजाइम. सो न्यूक्लियस पेलेट फॉर्म्ड एट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना 600 से लेकर के 750 इंटू जी 10 मिनट. माइटोकॉन्ड्रिया 10,000 से लेकर के 15,000 इंटू जी कितना 10 मिनट. इनर मेम्ब्रेन एंड एटीपी सिंथेज. लाइसोजम 18,000 से लेकर के 25,000 इंटू जी 10 मिनट. कैथेप्सिन. गोल्गी कॉम्प्लेक्स 35,000 से लेकर के 40,000 इंटू ग्राम 30 मिनट्स. गैलेक्टोजिल ट्रांसफरेज. माइक्रोजोम्स 75 से लेकर के 1 लाख इंटू जी 100 मिनट. ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. साइटोप्लाज्म सुपरनेटेंट. ये क्या करेगा मार्कर एंजाइम यहाँ पर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं किसी अगले एक बुक रीडिंग सेशन के साथ. तब तक के लिए जय हिंद. वंदे मातरम.